Hello everyone. Welcome back to our PYQ series. Yes, you have read it right. UPSC played well with Mineral Security Partnership in the recently held exam. ये क्या प्ले हुआ है, कैसा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. आई एम वेरी श्योर दैट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप. Now let's understand that if UPSC is asking, then how we should get ready for it. Especially if you have given 2023 prelims and if you are planning to give the 2024 prelims, how we should get ready for it. Let's understand. So the question which UPSC has asked in the recent exam which was held in the month of October itself, the question is, which of the following statements is or are correct about Mineral Security Partnership, MSP, के नाम से भी जाना जाता है इसको. It is an initiative to bolster critical mineral supply chain established by USA and other countries. India is not a partner of this initiative. Select the correct answer using the given code below. तो आंसर क्या होगा? We'll see. First, we'll see that why it was asked. So this question, this topic was taught by me in my current affairs classes. Current affairs class में हम लोगों ने कुछ इस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किए थे. MSP in news is related to what? MSP which is ongoing in news is related to what? This class was held in the month of November 2022. Last year, November 2022 का जो हमारा current affairs था for prelims 2023, then we had discussed this topic and we framed the statements. One of the statement was, it is a USA-led initiative of which India is not a part. Fine, but why did we discuss this in class? Because there was a news article, and the article was, as you can see here, I am teaching, Mineral Security Partnership concerns in Delhi over not being part of US-led Critical Mineral Alliance. Given India's EV and electronic push, rare earth mineral are vital for growth. This statement or this news article is talking about concern in Delhi over not being part of US-led Critical Mineral Alliance. मतलब इंडिया उसका हिस्सा नहीं है, इसके लिए कंसर्न जताया गया है. स्पेशली ये लास्ट ईयर नवंबर 2022 की न्यूज़ है, तब तक इंडिया इसका हिस्सा नहीं है और इस पे कंसर्न जताया गया है. We framed that question because हमने नवंबर में लास्ट ईयर क्लास ली थी and our option, if we see, our option which will be correct is it is a US-led initiative of which India is not a part. Now, what is Mineral Security Partnership? Let's understand that as well. So, Mineral Security Partnership, as I have shown the question already to all of you, this is answer. It is a global initiative, definitely US-led, and there were at that point of time 10 partners like Australia, Canada, Finland, Korea, Sweden, United Kingdom. They were part of it. India is not part of this initiative. When this news came, India was not part of this. Now, next comes why it was important. It was important for all the critical minerals, for example, cobalt, nickel, lithium, and also the 17 rare earth minerals. 17 rare earth elements की अगर हम बात करें तो China is dominating. So this initiative is also seen as a global initiative to counter China and its dominance. Especially अभी जो geopolitical scenario है जिसमें war भी हो रहा है, China को लेके एक China एंटी चाइना और यू कैन से चाइना का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए कुछ इनिशिएटिव्स ग्लोबल लेवल पे कंट्रीज आर कमिंग टुगेदर. बट यस, टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, be it the rare earth elements and these critical minerals, they are very important for electronic industry. They are very important for our consumer products, for example mobile phones, computer hardwares, other electronic devices, semiconductor, ये सब के लिए ज़रूरी होता है. तो ये MSP की डिटेल हमने देख ली. फाइन. तो ये हम लोगों ने लास्ट ईयर देखा नवंबर में, दिस न्यूज वाज देयर, इट वाज फ्लोटिंग एंड मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, वी आल्सो फ्रेम द क्वेश्चन एंड वी ऑल आर गुड टिल हियर. If we talk about rare earth elements, so these rare earth elements can be classified as light rare earth elements, that is LREE, or heavy rare earth elements. Okay, so कुछ तो इंडिया में है. कभी कभी क्वेश्चन नेक्स्ट लेवल का आ सकता है कि हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स कौन कौन से हैं एंड लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स. फॉर एग्जांपल, सम ऑफ द रेयर अर्थ एलिमेंट्स अवेलेबल इन इंडिया सच एज लैंथेनम, सेरियम, नियोडाइमियम, है ना, पैरिसोडाइमियम,
samarium, while others such as terbium, europium, they are classified as HREE. They are not available in India. So LREE जो हमारे लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो इंडिया में है, बट हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स दे आर नॉट अवेलेबल इन इंडिया. फॉर दैट वी नीड टू बी पार्ट ऑफ सच अलायंस, जहां से हमारी सप्लाई, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रीन इंडिया, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर मिशन भी लेके आए हैं. तो इन सारी चीजों के लिए दिस अवेलेबिलिटी ऑफ हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स in Indian deposits is not there, but we need that security, right? 70% of the global production of HRE is coming from China. ये भी एक fact पता होना चाहिए. Nowadays UPSC is mixing the facts and concepts in prelims as well, and they are framing statements. ठीक है? So if we revisit the question again which UPSC has asked in this October 1st, and if we have this knowledge which is coming from my classes, or if you have read current affairs on your own, our answer will be yes. MSP, Mineral Security Partnership, is an initiative to bolster critical supply chain established by USA and other countries. This statement is right. India is not a part of this initiative. Yes, India is not part of initiative, and if we have that knowledge, we will mark it. Yes, the both A and 2 are correct. 1 and 2 are correct, so the answer is C. But there is a problem. Problem is that this question has been asked by UPSC in the month of October. And in the month of June 2023, there was a news. And the news was India joins US-led critical mineral club, boost likely for EV and electronic. तो जो हमारा मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है उसको इंडिया ने ज्वाइन किया जून 24-23 में. सो अक्टूबर और नवंबर 2022 की न्यूज आती है कि इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ दैट एंड इट इज अ कंसर्न, और हाई लो रेयर अर्थ एलिमेंट्स एंड हाई रेयर अर्थ एलिमेंट्स इसको क्लासिफाई करें. इंडिया इज नॉट पार्ट ऑफ इट. हमारे जो सपने हैं, हमारा जो प्रोजेक्ट्स है उसका क्या होगा. बट इफ वी जस्ट अपडेट आवर न्यूज फ्रॉम जून, देन वी विल गेट दिस information that India is part of it, right? तो अब इंडिया अगर पार्ट है तो हमारा जो स्टेटमेंट है, जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को अगर हम फिर से रिविजिट करें, देन व्हाट विल बी आवर आंसर. आंसर विल बी one only. It is US led initiative. India is not part of it, so this statement is wrong. India is part of it. Since this exam was conducted in the month of October, our answer will be one only, A. So what I am trying to convey, that UPSC has played well. ये पुरानी न्यूज़ थी, मतलब अक्टूबर की न्यूज़ है. अभी एक साल के अंदर पूछा है यूपीएससी ने. लास्ट ईयर नवंबर में न्यूज़ में था, अभी अक्टूबर में पूछा है. अगर इस लास्ट 1 ईयर की न्यूज़ को भी आपने अपडेट नहीं किया है, देन वी विल लूज आवर मार्क्स. सो हाउ यूपीएससी इज प्लेइंग दैट इफ सम अपडेट इज ऑल्सो देयर, यू शुड फॉलो अप दैट अपडेट. और वो अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करंट अफेयर्स. See, we have seen with the help of example, I have shown you both the recent articles, one in the month of June and other in the October 2022 and June 23. इस तरीके से आपको अपडेट करना है. This is how you should prepare current affairs. If you are doing it, whatever your sources are, if you are updating like this and if you are following like this, you are trying to understand UPSC's mindset, it is well and good. बहुत अच्छी बात है, उस तरीके को पढ़िए, लेकिन एक ही सोर्स को आप बार बार रिवाइज करते रहिए. And to tell you, if we are talking about current affairs class, जो मैं बता रहा था कि इसको हमने पढ़ाया है, दिखाया है. So this is our current affairs class which I was talking about. और current affairs class we are running from prelims and mains point of view. You can check the details in the description box. And if you want to join, you are most welcome. You can check all the details in the description box. So make use of this series, use of our available courses to get benefit for the upcoming prelims, mains, anything, right? And other than this, if you want us to cover any particular topic जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या जिसकी complexity है, you please tell us. We will record that video for you that video also for you. और अभी हमारा जो focus है PYQ पे, वो धीरे धीरे चलता रहेगा. So make best use of it, revise very well. See you all in the next video. Take care. Bye bye.